Hello students, good afternoon and welcome to this session with Learn Fatapat. So let us continue our chapter of surface areas and volumes. 1 minute, I will start from here. Okay, so this is a chapter for class 10. Class 9th में भी ये same chapter है, so don't get confused. This session is for class 10th chapter, class 10 students. 2 बजे जो सेशन लिया था that was the same chapter but that was for class 9 students. Okay, so आपको ये सेम चैप्टर 2 क्लासेस में है. क्लास 9th में आपने इसके बेसिक्स पढ़े हैं, the basic formulas for surface areas and volumes of figures, 6 figures mostly. तो उसमें we had done single figures का sums and class 10 के इस चैप्टर में क्या है डिफरेंस, क्या है दोनों में कि इस चैप्टर में we are learning about कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स. ऐसे सेपरेटली नहीं है एक एक फिगर, जैसे एक स्फीयर या एक कोन क्लास 9 में हमने ऐसे सम्स किए हैं, बट क्लास 10 में एक कॉम्बिनेशन होगा फिगर्स का, लाइक स्फीयर प्लस कोन, मे बी हेमिस्फीयर प्लस कोन या सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन. ठीक है, सो दिस इज द योर चैप्टर 13 फॉर योर फ्रॉम योर टर्म 2 क्वेश्चन. तो इसमें वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 13.2. तो इसमें 13.2 का पार्ट 2 है ये. सो लेट मी टेल यू पार्ट 1 की जो एक्सरसाइज, पार्ट 1 जो था हमने एक्सरसाइज का लास्ट टाइम कवर किया था, तो उसमें वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द सम नंबर्स 1, 2 and 3 in the previous session. Okay, and today we will be covering sums from 4 to 8. तो 4th, 5th and 7th सम ये तो हम कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जो 6th and 8th है, 6th and 8th या ये दोनों दे आर वेरी डायरेक्ट टाइप ऑफ सम्स. इसमें यू डोंट नीड me to show each and every step. So this I might just give you the idea how to do it, and these 4, 5, 7 we will be doing completely. ठीक है, so are you clear of what this session is going to be about? चलो, so we will start. 1 minute. Okay, चलो, so let's see. Okay, I hope the video is playing now. चलो, then let's start with question number 4. And also please download the learning app, Learn Fatafat learning app from the Play Store, because इसी ऐप में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस मिलेगी for your particular class. Class 1 से लेके class 12 स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो. Various boards are there, CBSE बोर्ड है, other state boards हैं. So when you download it, you have to just select your class and your board, ताकि आपको उससे relevant, जो उससे related study material है वो मिल जाएगा. Especially don't forget to watch the animated videos, which are like one video for one topic. तो एक ही टॉपिक एक्सप्लेन करता है, तो इसलिए ये वीडियोस बहुत ही छोटी ड्यूरेशन के भी हैं, मे बी अराउंड 5 minutes, कुछ 2 मिनट या 3 मिनट के भी हैं, वेरी शॉर्ट वीडियोस. तो एनिमेटेड फॉर्म में व्हेन यू गोइंग टू सी द टॉपिक, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी बेटर वे. सिंपल भी होगा एंड यू विल रिमेंबर इट ऑल्सो, okay, for a longer time. So I hope you will use ये सारे फीचर्स, बहुत सारे और फीचर्स हैं लर्निंग ऐप में, तो इसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो. प्ले स्टोर से कर लो या फिर वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो, क्लिक करके इंस्टॉल. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4, एज आई टोल्ड यू दिस इज द क्वेश्चन 4. सो फिगर भी इसमें दिया है क्वेश्चन में, and question reads a pen stand made of wood. ये देखो, ये पेन स्टैंड है, ये वुड से बना है. It is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold the pens. So this figure is a combination of what? Cuboid है और 4 कोन्स हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ गए. देखो, कोनिकल डिप्रेशन, टॉप व्यू से अगर आप देखोगे ऊपर से आपको लगेगा ये सर्कल जैसा दिख रहा है अपर पार्ट,
but actually it is a cone that you can see in this figure. See, like this cone, conical depression है. So this is like this. Okay. The depressions, 4 ऐसे depression हैं इस पेन स्टैंड में. अब dimensions of the cuboid, तो फिगर कौन से हुए? 2. So we will write the name of the figure ताकि हम उसका डेटा लिखें और फिर कैलकुलेशन we will do. सेकेंड है कोन, राइट. अभी क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या दिया है? 15 by 10 by 3.5. सो 15 by 10 by 3.5 and everything is in centimeter. And for cone what is given? The radius of each depression. तो radius दिया है 0.5 centimeter and the depth is 1.4. So this part from here to here, depth, यानी कि क्या है ये है height of the cone. Okay, so height of the cone is given is equal to 1.4 centimeter. Find the volume of wood used in the entire stand. So first we will understand के question में क्या find करने के लिए बोल रहे हैं. Volume of wood. तो ये पेन स्टैंड बनाने के लिए कितना वुड यूज करना होगा, दैट इज द क्वेश्चन. सो वो कैसे मिलेगा हमें? आई विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड उसमें से आई विल सबट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ दीज 4 डिप्रेशंस. क्योंकि ये तो डिप्रेशन है, इसमें तो ये जो पार्ट है इसमें कोई वुड लगने वाला नहीं है, इसमें तो पेन या पेंसिल आएगा जो भी है. दैट्स वाई ये जो मैंने पिंक शेड किया है ये मुझे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस करना है. दैट्स इट. Okay, simple. Okay, so we will write तो क्यूबॉइड और कोन का पहले सेपरेटली वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं to make it simple. So the main part what I am going to do now, solutions तो आपको कहीं भी देख के मिल जाएंगे of these numericals. But if you want to see this, I will tell you to see the session completely. ये जो मैथ्स के especially numericals के, साइंस के हो या मैथ्स के सेशंस में working which I am going to show you. That will be the easiest way possible for you. Okay, क्योंकि working is a very important part in this chapter, especially surface areas and volumes में. तो आप पूरी working भी देखो किस तरह हो रही है, so that you get an idea how you can make your calculation as easy as possible. And yes, if you have a better way of doing it, तो आप वो भी use कर सकते हैं. Let me also know about it. Okay. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यहाँ पे इस सम में सिंपलेस्ट वे इज दिस ओनली कि पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, फिर कोन का, और उसको हम सेपरेटली ही करेंगे क्योंकि क्यूबॉइड में कुछ पाई या आर कुछ है नहीं, एकदम ही अलग फॉर्मूला है, अलग ही डायमेंशंस है. ओके, सो क्यूबॉइड इज LBH, तो आई विल गेट 15 into 10 into 3.5. So that makes it 15 into 10 into 3.5 हो गया 35. 15 into 35, just multiply and you will get the answer 525. Cubic centimeter unit will be cubic centimeter. ये ध्यान देना है कि सारे dimensions सेम यूनिट में होने चाहिए. यहाँ पे सारे के सारे सेंटीमीटर में है. If not, then we have to convert them in the same dimension, in the same unit. Okay, now next we will find volume of one conical depression. पहले ढूंढेंगे और फिर इसको multiply by 4 कर देंगे बाद में. Okay, so what will be the volume of one cone? Let's find it out. Here write the formula. So I will get volume is equal to volume of a cone is 1 by 3 pi r square h. Put the values 1 by 3. यहाँ पे पाई को पाई रख के कुछ फायदा नहीं है. As I told you, cuboid में कोई पाई है नहीं. So let's substitute it. 22 by 7. Radius is how much? Given 0.5 centimeter. तो इसका square. And height of the cone. Height of the cone is 1.4. That's it. So 7 ones are 7, 0.2s are 14. अब 3 है नीचे पर कुछ कैंसिल होगा नहीं उससे.
तो व्हाट विल आई गेट 22 into 0.2 पहले मैं कर रही हूँ, तो आई विल गेट 44 यानी 4.4 मल्टीप्लाई बाय, अब 0.5 into 0.5, 0.5 क्या होता है, हाफ, सो हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 1/4, एंड ये 3 जो ऑलरेडी बचा है वो भी लिखना है, 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, so I will get 1.1 upon 3. ओके, सो अब मुझे फाइंड करना है 5 3s are 5. Okay, so I will get 4/3 volume of the cone. ठीक है, so I will get 1.1/3. So this will give me यूनिट लिख लेते हैं इसका, सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो क्यूबिक सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ 4 cones will be how much? 4 conical depressions are there. So I will write therefore, चलो फाइनल ही लिख लेते हैं, therefore the volume किसका फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ वुड which will be used, वॉल्यूम ऑफ द वुड will be volume of cuboid minus volume of 4 cones. Okay, so I will write, let me just see, ये 0.5 0.5 and this is 1.4. okay, choose a, yeah, okay, 0.5 half, ये 4, ये 3 and 22 correct है, 4 1s are 4 1s are 1.1 into 1. Okay, so volume of the cuboid is 525 minus वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, एक कोन का अगर इतना है तो 4 कोन्स का इतना होगा. नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन, दिस विल बिकम 4.4 upon 3. So 4.4 upon 3 when you do, you will get the answer 3 1s are 3, 3 4s are 12 and 2 बचा तो 3 6 are 18, right? तो यानी कि मुझे मिलेगा 525 में से I have to minus 1.46. So this will give me how much? 523.54. That's the final answer. 523.54 unit will be cubic centimeter. तो इतना volume of wood I will need to make this pen stand. That's the answer. Clear? Got it? Then let's do the next sum. Next question reads, a vessel is in the form of an inverted cone. So यहाँ पे diagram not given, so I will just draw the diagram first. Inverted cone है, so I will draw the vessel something like that. Okay, so this is my vessel in the form of an inverted cone. Height is given 8 centimeter. So I will write the dimension, this one, this is 8 centimeter. And radius of its top which is open, ये open vessel है, तो radius of its top यानी ये part है 5 centimeter. इस vessel में क्या है, it is filled with water up to the brim. Up to the brim means completely filled with water, fully. When layered shots, okay, each of which is a sphere. What is the second figure here? Sphere, layered shots, यानी छोटे छोटे, you may consider like small metal balls. Okay, so some of these lead shots, some of these balls are dropped into this vessel जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा है. तो ऑब्वियसली अगर ये वेसल पहले ही फुल है और इसमें हम कुछ डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा.
So it's given here that the water flows out. And how much water flows out? That is also given. 1/4 of the water. So इसमें से जितना भी पानी है उसमें 1/4 बाहर गिर जाएगा. What we have to find is the number of lead shots dropped in the vessel. तो मैंने lead shots कितने डाले हैं vessel में. So let me just draw यहाँ पे जैसे for example one lead shot is like this. तो ऐसे कितने lead shots I will have to put in this vessel ताकि इसका सिर्फ 1/4 वॉल्यूम जो है वो बाहर फ्लो आउट हो जाए. That is the question. Okay, clear? So it is very obvious कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम दो चीजों का फाइंड करना होगा. एक तो इस कोनिकल वेसल का और एक ये लेड शॉट्स का. But how will you find the number of lead shots which are added? 1/4 of the water flows out. इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा? We know कि जितने lead shots डाले होंगे वॉल्यूम ऑफ दोज लेड शॉट्स उतना ही वाटर बाहर आएगा. मीन्स the volume of the lead shots, okay, volume of the lead shots कितने? For example n. The volume of n lead shots is how much? It is equal to 1/4 the volume of this conical vessel, of this inverted conical vessel. ठीक है, क्योंकि जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना ही वॉल्यूम बाहर आया. That is the we know in science we have studied it already. तो मीन्स मैंने अगर इसमें अभी लेड शॉट्स कितने डाले हैं दैट ओनली वी हैव टू फाइंड आउट. सो आई एम राइटिंग दैट n वॉल्यूम ऑफ दोस n लेड शॉट्स विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम व्हिच हैज फ्लोन आउट व्हिच इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द जितना उसमें पानी था यानी पूरा वॉल्यूम ऑफ द कोन. ठीक है, दैट इज क्लियर. सो वंस दिस इज क्लियर अब इसको हम फॉर्मूला में डाल सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड कर लेते हैं and volume of lead shots separately and then we'll work it out. So let's see volume of cone first. फटाफट volume of cone का formula लिख देते हैं. Sorry. So we know volume of a cone is 1/3 pi r square h. Now what you will do here calculation इसमें थोड़ी सी easy हो जाए. That's why finally we have to actually divide both the volumes. ठीक है, number of lead shots के लिए. So you remember number of anything हम कैसे find करते हैं? Number of anything is big volume upon small volume. तो यहाँ पे number क्या होगा? Volume of the big volume क्या होगा? Volume of the cone obviously, लेकिन 1/4 upon volume of one lead shot, right? तो ऐसे हम डिवाइड करने वाले हैं. तो इसलिए इसमें कैलकुलेशन में क्या करेंगे, पाई को हम अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे. वी विल कीप पाई एज इट इज एंड अदर वैल्यूज वी कैन सब्स्टिट्यूट. सो रेडियस यहाँ पे रेडियस स्क्वायर है एंड इसमें रेडियस. ठीक है, बट वी विल सब्स्टिट्यूट 1/3 पाई. आई विल नॉट सब्स्टिट्यूट. रेडियस ऑफ द कोन इज गिवन 5 centimeter. So radius we will substitute because दोनों का रेडियस अलग है. लेड शॉट का है जो स्फीयर का रेडियस दैट इज 0.5 only. Okay, this is 0.5 and कोन का तो 5 है. Obviously ये लेड शॉट का बहुत कम होगा ना, छोटे छोटे बॉल. ठीक है, so I am going to write all the values. सिर्फ पाई को हम पाई रहने देते हैं. वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए कोन का रेडियस कितना है 5, राइट? 5 सेंटीमीटर है ना. सो 5 into 5 एंड हाइट कितनी है? कोन की हाइट 8 is given to us. So I will get 25 8 जा 25 4 जा 100 होता है, 8 जा होता है 200. तो 200 अपॉन 3 पाई. इसको पाई को ऐसे ही रहने देंगे. ठीक है. So if you want to write the unit, cubic centimeter. So how much will be the water which has flown out? Volume of water flown out. Okay. That will be equal to 1/4 of this volume. So 1/4 of 200 pi upon 3.
So this will become 4 5 are 20, 50 pi by 3 cubic centimeter. एंड ये जो वॉल्यूम बाहर आया है पानी का, दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ n lead shots. So let us find the volume of one lead shot. Here I'll erase this and make some space. आप वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट ढूंढो, तब तक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखो. So I will get volume of one lead shot, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r cube. Again, don't substitute pi. Keep it as it is. Radius I will substitute. Radius कितना है स्फीयर का? 0.5. यूनिट चेक कर लेना, सारे सेंटीमीटर में ही है. Yes, 0.5. I will have to write the cube. तो I will get the answer as, ये कितना हो जाएगा? 125. 4 into 125 and 125 upon 1000 होगा, क्योंकि 3 डेसिमल आने वाले हैं. तो 1000 में नीचे लिखने वाली हूँ. 3 into 1000 3000 and pi. Okay, so I will leave it here only and I will write this as this much cubic centimeter is the volume of one lead shot. तो एक बॉल जो हमने इसमें डाला है वेसल में, उसका इतना वॉल्यूम है. तो आई हैव टू फाइंड कितने बॉल्स डाले हैं. तो अगेन अब लेफ्ट साइड आई विल जस्ट इरेज अ लिटिल एंड आई विल फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स. नंबर ऑफ लेड शॉट्स का फॉर्मूला हमने देखा था. दैट विल बी द बिगर वॉल्यूम अपॉन द स्मॉलर वॉल्यूम. तो मेरा बिगर वॉल्यूम क्या है? ये जो पानी निकला है. सो 50 pi by 3 upon smaller volume, यानी volume of one lead shot. So see carefully इसका calculation कैसे हो रहा है. Now I will write equal to, अब ये volume of one lead shot I've written here, तो let me erase this and make space. ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 50 pi by 3 multiplied by डिनोमिनेटर का सारा हो जाएगा रेसिप्रोकल. 125 into 4 pi and just do this calculation. pi देखो कैंसिल हो गया and that's the reason that we did not substitute pi first previously. Okay, कॉम्प्लिकेशन हमें कम करना है, तो बढ़ाना नहीं है. अब 25 का टेबल में यूज करूंगी because I find that easy. 25 2s are 50 and 25 pi's are 125. Then I will get 2 1s are 2 and 2 2s are 4. With 3 1s are 3 and 3 thousands are 3000. So what I'm left with is 1000 upon 5 into 2. 1000 upon 5 2s are 10. तो मुझे आंसर कितना मिला है? 1000 upon 10 is how much? So the answer is 100. So what is this 100? This 100 is the number of lead shots dropped in the vessel. और क्योंकि एक नंबर है तो इसको हम कोई यूनिट्स नहीं लिखेंगे. Okay, so I hope you follow the calculation and do it correctly. So let's do the next question now. तो फोर्थ और फिफ्थ हो गए. सिक्स वाला मैंने आपको बताया था कि I will leave it up to you. ये थोड़ा सा वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. I'll just tell you what you have to do here. Solid iron pole है जिसमें एक सिलेंडर है which is surmounted by another cylinder. तो इसका फिगर कुछ ऐसा होगा जो सॉलिड आयरन पोल की बात हो रही है. ऊपर एक छोटा सिलेंडर है और नीचे एक बड़ा सिलेंडर है. Like this is this iron pole. So cylinder of height 220 centimeter is this one, and base diameter this is 24. This is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter. So this one is having a height 60 centimeter and radius इसका है
8 centimeter. We have to find the mass of the pole. ये पूरे pole का mass. This full figure is the pole. Okay, it's a combination of both these cylinders. So, if I have to find the mass of the pole, it is given कि 1 centimeter cube of iron का mass है 8 gram. 1 centimeter cube, 1 cubic centimeter का mass है 8 grams. So, for making this pole, how much will be the mass of the pole? So how will you find this? Obviously, first we find कि ये पूरे pole का cubic centimeter कितना है. Means you will find the volume of this pole, and that's quite easy. Volume of ये जो बड़ा cylinder है, okay, plus volume of that small cylinder जो उसके ऊपर. So when you will add both these, and you know the volume of cylinder formula is pi r square h. So you will do pi r square h plus pi r square h. Pi common है, radius and height are different for both these cylinders. So just do this and calculate, and you will get the answer in cubic centimeter for this part. And then उसका mass find करने के लिए you will just multiply this by 8. Then you will get the mass. Okay, so please try this on your own, and let's do the next one. Okay, seventh one is a solid consisting of a right circular cone. A cone is standing on a hemisphere. A cone is standing on a hemisphere. So let's draw it. If the hemisphere is like this and cone is like this. And how do I know ये दोनों equal हैं? देखो radius दोनों का equal ही होगा. Radius 60 centimeter है cone का और cylinder का भी 60 है. That's why I know that these two are equal radius. ठीक है, so for example, like this figure, cone height is given 120 centimeter. So this part is 120 centimeter और radius तो हमने देखा कि ये radius यहाँ से लेके यहाँ तक ये value है 60 centimeter. Then after this what is given? After this हेमिस्फीयर रेडियस 60 वो भी मार्क हो गया. हेमिस्फीयर और कोन का रेडियस सेम है. एंड दिस सॉलिड इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. देयर इज वन मोर फिगर हियर. राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाला है इसको विच इज फुल ऑफ वाटर. तो सच दैट इट टचेस द बॉटम. तो मतलब ये है कि 1 minute आई विल try to make it. So it is touching the bottom of the cylinder. So you can consider this is the cylinder. Okay. So ये है cylinder and touches the bottom. Okay. So let's draw this again so that you understand कि इसका bottom touch हो रहा है इसको. So I will just draw one part like this. Okay, तो अभी समझेगा कि ये solid इसको touch हो रहा है. Find the volume of water left in the cylinder. तो जब इसको मैंने सिलेंडर में डाला है solid को और सिलेंडर में ऑलरेडी पानी भरा हुआ था तो ऑब्वियसली पानी बाहर निकलेगा. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर हमें ढूंढना है. हाउ विल आई गेट दैट? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर विल बी कि जितना पहले सिलेंडर में था वॉल्यूम माइनस जितना सिलेंडर से बाहर निकल गया. एंड बाहर क्यों निकला? बिकॉज आई इमर्स दिस सॉलिड इन द सिलेंडर. So how much water will come out of the cylinder? That will be equal to volume of the solid which I have immersed in the cylinder. So volume जो हमें ढूंढना है, volume of the water which is left in the cylinder, this will be volume of the cylinder जो total पहले पानी से भरा था minus volume of the solid, this solid. Okay, क्योंकि ये जितना वॉल्यूम है उतना पानी निकल गया सिलेंडर से. Okay, this is how we will do.
So I have to find two things, volume of the cylinder और volume of the solid, and दोनों को करना होगा minus. Okay, so volume of cylinder तो we can do directly. Volume of the cylinder, that will be pi r square h. And again यहाँ पे भी you don't need to substitute pi first only. That we can do in the final calculation. So let's see here. Volume of cylinder we will get. Volume formula is pi r square h. Pi, radius of cylinder is how much? Same, 60 centimeter. Then height is how much? Height of the cylinder is this much, जो height of the solid है, क्योंकि यहाँ पे बोला है it is placed upright and it touches the bottom. तो इसकी पूरी height यही होगी. Radius of the cylinder is 60 and height is given as 180. Here, height is given as 180. So I am going to write height as 180. So I will get 60 square is 6 6 is 36. So 3600 into 1800 pi. Okay. So when you do 3600 into 1800, you will get 648. 36 into 18 कर लो तो 648 मिलेगा. इंटू ये जो 1 2 3 4 जीरोस हैं, 648 180 into, okay, this is not 1800, this is 180. Okay, 180. ठीक है. So 648 into 3 zeros यानी 1000. So this much pi. So this is my formula. This is my value of volume of cylinder. Similarly, now we will find what is the volume of the solid. Volume of the solid is equal to what? It is equal to volume of the cone plus volume of the hemisphere. Both we will have to add. Volume of the cone is how much? Volume of the cone is 1 by 3 pi r square h. Volume of the hemisphere is 2 by 3 pi r cube. तो मैं कॉमन ले लेती हूँ टू मेक द कैलकुलेशन इजियर. पाई इज कॉमन, रेडियस भी दोनों का कॉमन है, तो आई कैन टेक आर स्क्वायर कॉमन एंड अपॉन 3 आई कैन टेक कॉमन. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ पाई आर स्क्वायर अपॉन 3. यहाँ पे बचेगा h एंड यहाँ पे बचेगा पाई आर स्क्वायर. दिस विल बी 2r. And like this we will do the calculation. Pi, no need to substitute. Radius is 60. So 60 square, so 3600 upon 3. Height of the cone, h क्या है? Height of the cone. Height of the cone is 120 plus twice of r. ये radius 60 है, तो 2 into 60 120. So यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा. 3 12 are 36. So let's continue. I will get volume of the solid equal to 1200 into 120 plus 120 will give me 240 and pi. So we can multiply 12 and 24. And ये जो 3 जीरो है इनको सेपरेटली लिख देंगे. So I'll get 12 fours are, so I'll get 288. Okay, 24 into 12, that will give me 288 into 1000 यानी 10 raised to 3 pi. So this is the, so for volume of cylinder, all the volumes are in cubic centimeter. This also and this also. एक बार ये वॉल्यूम मिल गया, अब मुझे सिर्फ दोनों को करना है माइनस. So finally I will write, yes, here the calculation is lengthy.
ओके बट लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वेर यू हैव टू डू a lot of calculation, but it is in easier form, as much easy as possible, but you have to do it with patience. Okay, no hurry burry, otherwise it may go wrong, and if it goes wrong तो सारा time भी waste हो जाएगा और marks भी नहीं मिलेंगे. Okay, so we will find here now volume of the water left. So volume of the water left के लिए हमें क्या करना था? Volume of the cylinder 648 into 10 raised to 3 pi minus volume of the solid जो हमें मिला है 288 into 10 raised to 3 pi. I will take 10 raised to 3 pi common. 648 minus 288 in the bracket. 648 minus 288 will give you 360. Okay, and after this, अब तो pi को substitute कर दो. Okay, we have made it as simple as possible. But इसके आगे we have to do 1000 into 3.14 into 360. So just do 36 into 314 and then decimal or zeros डाल के we will get the answer as 11304 00 cubic centimeter. And if you convert this to cubic meter, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है ये, तो इसको cubic meter में convert करने के लिए divide by 10 raised to 6. So I will get answer as 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.13 cubic meter. That's my final answer. Here cubic centimeter में भी रखा तो it's okay क्योंकि क्वेश्चन में कुछ यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया है, so you can keep your answer in cubic centimeter or you can convert it to cubic meter also. So this was the calculation. Okay, it is a little lengthy and tedious, but yes, this will also fetch you more marks because it's a big sum. Okay, so we have done the 3 sums जो मैंने completely बोला था हम करेंगे. अब 8th वाला भी I'll just give you the hint and you can do it on your own. A spherical glass vessel has a cylindrical neck. So my combination will look something like this. इसका neck cylindrical है and उसका जो ये है spherical है. So somewhat like this दिखेगा vessel. ये cylindrical है. Cylindrical neck है 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. Okay, and diameter of the spherical part, diameter. So this full is 8.5. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cc. Check whether she is correct. So we have to find कि इस vessel का volume कितना होगा. So this is also I told you direct type का काम है. इस vessel का volume आप कर लोगे vessel of the sphere plus volume of the sphere plus volume of the upper cylindrical part. So 4 by 3 pi r cube here and 1 by 3 pi not 1 by 3 only pi r square here 4 by 3 pi r cube plus cylinder is pi r square h. So रेडियस आई हैव रिटन डिफरेंट बिकॉज ये स्फीयर का रेडियस बड़ा है और सिलेंडर का रेडियस छोटा है. सो यू कैन जस्ट फाइंड देम एंड एड द वैल्यूज एंड चेक कि इसका आंसर 345 आएगा या नहीं. इफ इट इज इक्वल टू देन इट इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन बाय द चाइल्ड, अगर नहीं तो रॉन्ग. तो इसका आंसर यू विल गेट अराउंड 346.5 cc which means कि 345 cc जिसने बोला था वो इट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट. इट्स a little 1.5 cc कम उसने बोला है, तो एक्चुअल है 1.5 cc ज्यादा. Okay, so this completes our exercise of today. So thank you for watching and don't forget to like the video if you have understood the sums and you like the way they are being solved. So definitely like it and share it with your friends. So I'll see you in my next class.
Take care till then. Bye bye.